So, hello everyone. Welcome to another session under the series Early Edge Young Professional. This is a pre-MBA program that we are running, and obviously now most of the audience would know about the program. So, directly starting with the session, setting the base right, that this particular session is about how to build a strong profile around MBA. Right. So this particular session is around that how can you build a good profile around MBA, right? Because when I will talk about a good profile in this particular session, simply I will mean a good CV, a CV that can get you shortlisted, a CV that can help you enter into good set of companies, as simple as that. Now, profile for me is a good CV, as simple as that. So, if we are on the same page, I'll begin with the session. But yes, because a lot of people have converted good B schools, they are very much happy about that and they should be very much happy about that. But you have to see what picture is lying ahead of you. You are joining a B school where there will be people with very good profiles and you have to compete with all of them, right? And this is not to create FOMO, but this is the given reality, right? Could be a lot of people who are going into a B school as a fresher, but on the contrary, a lot of people with come with work ex. There could be a few people who are not having that great academics, but again, on the contrary, there will be a lot of people with very good academics, right? So now the point is not to discuss about what we do not have, but to discuss about what all things we can change in our profile and what is the right way to sort of go around those things and build around those things in our CV. Right. So, starting with the session, see, firstly, let me tell you why a good profile is very much important. It is the first thing that reaches out to the recruiters before even you enter a GD room or a interview room, right? So if you believe that you are preparing very well for a company and everything, and this is a given reality, this has happened with a lot of people also, that once there is a pre-placement talk for a company, if it is a very good company, everyone starts preparing for it. If not preparing, they start discussing around it. They start sort of making plans around it. How can we prepare? What all things can we do? But the thing that they forget is for sitting process in that particular company, you need to get a shortlist. And to get a shortlist, your CV should be very good. Secondly, it should align with the company, right? Whatever they are looking for, whatever job role they have brought in this particular year. So everything matters. But again, if you have a good CV, chances of getting a shortlist increases. I am repeating this again. Having a good CV don't secures a seat for you in an interview room, but definitely it sort of gives you a head start in terms of getting shortlisted, right? So that is where importance of CV comes into picture a lot. And I have seen a lot of people out of you who are there in a WhatsApp group discussing about profile, discussing about what can we do, our XYZ courses or certifications having that sort of value. See, Amijo, to be very honest, luck is the only factor that will get you placed, and I'll be very honest, right? It is very easy for me to help Preppy in terms of selling their courses and everything, but I am not a person who go against ethics, and this is something I abide by, that you have to have a good luck, right? So everything should be there. See, एक ना bucket list होती है, right? Having a good CV, yes, it is something you should have. Having a good placement preparation, yes, it is something you should have. If you don't have these, you will any which ways not get placed. But on the top of that, you also have to have good luck. And obviously it is about the expectation of the panelist. मतलब जिसको हम luck बोलते हैं ना, उसको हम luck इसलिए बोलते हैं because we don't know what exactly panelist is looking for. Right. So that is why we call it luck. But basically, in simple terms, it is panelist has a set expectation in his or her mind. And if you align with those expectations, you are selected. If not, you are rejected. And that is what, in a common generic term, we call out as luck. Right, Amijo? So I hope this answers your question. But again, you will.
be given that opportunity to match expectation of a panelist if you are shortlisted for that round. And this discussion that we are going to have today is for getting that shortlist, right? Or at least have a fair chance to get a shortlist, right? So your CV enters the interview room before you do. So make sure it speaks well for you. And when I say speak well, firstly, it should have everything that is required. We will discuss it in the session. And then it should have everything in a very structured and in a very good manner, right? So I have created this matrix for you, and like if you want, you can take a picture from it, but we will be sharing PDFs also. So this is a matrix that you should always keep in mind. I have divided this matrix into two axes. First is divided in unchangeable and changeable, and second axis is divided into must-haves and good to have. So when we talk about things that are unchangeable, in that must have is good past academic scores. If you have it, good for you. If not, you can't change anything about it. Then graduation from a credible institute. Now, what do I mean by credible? If you have a pedigree in your CV, like if you are coming from a IIT, a NIT, a BITS, or a SRCC, so if you are coming from these sort of colleges, obviously you will have edge over your batchmates. But if you're not coming from these colleges, can you change anything about them? Answer simply remains no. Then these things are sort of must-haves. I would say graduation from a credible institute is somewhat in a gray area, but yes, good past academic scores is a must-have. Then what are good to have? A prior work experience, a undergraduate internship, significant extracurricular achievement, UG clubs, committees, leadership role if you have played any, academic rank, scholarship medal. So all of these things that I have listed are good to have. But if you don't have anything till now amongst these, then you can't change anything. ऐसा नहीं है कि now you can go and have a work ex for 2-3 months till the time you join college. 2-3 months का कोई work ex होता नहीं है in all honesty, right? So now coming to the things that actually matters to us, because these are the things that are changeable, and then it is again divided into must-haves and good to have. So what are the changeables and must-haves? Firstly, strong MBA academics, maintain good CGPA in your MBA college. Irrespective of whatever your scores have been in past, please try to maintain good academics in your MBA colleges. And what do I mean by good academics? Am I saying that you become a IR in your college? The answer is no. But I am saying maintain respectable scores so that if a company comes with a bare minimum percentage criteria or a GPA criteria, you at least passes that. And this is a no-brainer that we should have no backlogs while our MBA, right? Second thing is start participating in case competitions. And please see, I have written winning case competition, becoming finalist in good to have, but participation is a must-have at this point in time. You have already seen a few case comps are already live, like a case comp from HUL, Colgate Inner Circle. Then there is one from RPG as well. So a few case comps are already live, and if you are hearing these case comps for the first time, ki, oh, what is RPG? I don't know anything. Then you are already late. Join that race and start running like a very serious athlete, right? Going to the next thing is relevant certification and courses. And while I joined this session, I also saw a few people were asking around relevant certification and courses. I will discuss about them, don't worry. Then the most important part is from now, whatever you do, you should do it with a clear mindset that it should be a quantifiable impact created resume CE pointer for me, right? So don't do anything that wastes your time, that wastes your energy, and it has no outcome. So before you start anything, before you devote your time to anything, please make sure that it enhances at least some aspect of your CV. Now, going to the second part that is good to have is join a MBA club or a committee. It will help you out in a lot of ways. Second point is case competitions, wins, and finals. So these are good to have. Before your CV freezes, if you can at least win or go to final or semi-final stage of at least one or two case competitions, not saying that corporate case comps pe hi jao, even if you can win a B school competition, you can mention it in your CV. It is a very good thing because in first 2-3 months, even if you win a B school case competition, that is a very good thing. You
have done something that a lot of people in your batch are still wondering about, right? Then second, the third thing is basically life projects and internships. So to be honest, if you will ask from me personally, I would say that this is a must have. But if I call it out a must have, then it will literally create FOMO in a lot of people. And I don't want you to enter your MBA with a sense of FOMO or a sense of fear that, hey, there was a must have in that bucket list that we discussed, and I don't have that till now, right? So I have listed this down as a good to have thing. People coming with work experience, you can again think about it, that do you need something in your profile that aligns with the domains that you would be sitting for in your interviews. And people who are going out as freshers, see, this is the only thing that I can talk about when it comes to practical and application based exposure. All certifications, everything are good, but again, it does not depicts any practical or application based exposure. So if you would want to talk about something really relevant in your interview, then you have to have a good life project or a internship. Second, if you are someone who is going for finals this year, right? If anyone who has already done their first year and will be joining their second year, then a strong summer internship brand, if sitting for final placement, is a must. So a good brand in your CV from your summers matters a lot. Sure. Right. So I hope everyone is aligned on this slide, or do you have any doubt or something to be discussed? If not, just let me know in the chat box so that we can move to the next slide. Sure. Cool. ठीक है. So this is a basic timeline that if you follow will help you out. If you not follow, then also it is fine. There is no hard and fast rule that you have to follow this timeline only, then only you will get placed. I can bet that a lot of people who will not even see this video still get placed in a lot of good companies. So ऐसा कुछ नहीं है कि ये है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा. Let's be honest, a lot of people who will not even watch this video will get placed in good companies. But still, if you are watching this video, why not to follow some structure before you join a B school? So from the changeable part, from the last slide, I have listed them down as a line items, and then I have plotted a Gantt chart against it. So strong MBA academics and maintain a good CGPA. You only tell me that, is it possible to do it now? Just answer yes or no very quickly. Is it possible to maintain a good CGPA right now for you? Exactly. So you have to wait before for to join a B school. Then you will be giving your exams, and then sort of you will get your first semester marks. Then your CGPA will be decided, right? So we can't do anything about it right now. Definitely, we can brush up on our basics if you would want to. You can spend time on that. Yes, but it will not be reflected on your CV in any ways, any which ways, right? So जुलाई टू अगस्त is something जहाँ पे फर्स्ट मिड टर्म हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द लोगों के. So that is the first milestone you would have. See, Vinayaka, weak subjects तो आपको तब पता होंगे ना, when you know the complete curriculum, when you know what are the topics that you will be studying in the curriculum, and what sort of exam pattern the college you will be joining follows. Case study based होता है कि MCQ based होता है कि क्या होता है, how much weightage is given to written exam, how much weightage is given to class participation, etc. जब ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो obviously you can spend time reading upon weak subjects, but it will not be reflecting on your CV. That is what my whole point is, right? And पढ़ाई एक दिन पहले ही होगी मार्क्स लाने वाली जो होगी. तो ऑब्वियसली आप ये सब कर सकते हो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट. And then case competition participation, you tell me, can we do it now? Is it possible for us to participate in case competition from now itself? The answer is yes. And if you are planning to say no, then again I would question your awareness that you don't know. See, we had a person last to last year who bagged a internship before even joining the B school. Right. So
जो केस कंपटीशन है ना, द HUL केस कॉम, द कोलगेट इनर सर्कल, RPG, and some of other case competitions that will come up in near future, these case comp give you a literal opportunity to bag a internship before even you join a B school. So just try to relate to that mindset of having an internship before even joining a B school. Can you even imagine that how relaxed you will join a B school? Like you will literally be, ki, I don't have to worry about anything because my first semester is almost sorted. I have already got a internship. Now my sole focus will be on participating more and more case competitions. Yes, it can be one of the high selling points for you if you would want to join this committee that is mentioned in the chat box. Then third thing is relevant certifications and courses. Yes, you can do it right now. Should you do it right now or not? That is obviously a question, but obviously, yes, you can do them right now. Now tell me, can you be a part of MBA clubs and committees from now itself? मैं बोलूँ कल से you have to be a part of any MBA club or committee. Can you do that? Exactly. So coming to the next thing, then it is case competition wins and finals. See, I'll be very honest. If you are planning ki I'll join B school, then I'll start participating in case competitions. And if you feel that you can win first or second case competition you participate in, then it will be very bleak chance. It is not very easy to win a case competition because just go on Unstop if you have never visited Unstop. Just see the number of registration in any good corporate case competition and just see the number of finalists that that case competition has. Right. So you need to start participating now. You need to start practicing from now, and then only you can sort of expect to win or at least go to a podium level in few months, in maybe 3 or 4 months. Then life project and internship, it is something you can do now as well. What you have to do for that, that we will obviously discuss, but it is something that you should do, can do now as well. And the last and the most important part is that whatever you do should be done बिफोर योर सीवी गेट्स फ्रीज. एक बार आपका सीवी फ्रीज हो गया ना, फिर आपको अगले साल ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप फाइनल्स के लिए बैठे तो टू अपग्रेड योर सीवी, राइट. यूजुअली प्लेसमेंट टीम विल नॉट गिव यू अपॉर्चुनिटी कि ठीक है अच्छा यू हैव डन दिस नाउ, लेट अस अपडेट योर सीवी अगेन. ओके नाउ यू हैव डन दिस, लेट अस अपडेट योर सीवी अगेन. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. आपका सीवी एक बार फ्रीज हो गया until and unless you have done something exceptionally great. See, Piyush, it is very subjective. I would say if it is a quality life project, then even one will also suffice. And if you feel that you can do two life projects will be more than enough. This is what I personally feel. And if you're doing two life project, make sure that it is from the same domain, but way apart when it comes to the exact work you are doing. For example, if you're doing a two life project in sales and marketing, so if you have done one life project in sales, make sure that other life project goes into some part of marketing, a branding life project or a digital marketing life project or a performance marketing life project, right? हाउ टू प्रिपेयर. हाँ हाँ, सब कवर होगा, डोंट वरी. ठीक. कूल. So Sneha, it is already given on the screen. It depends from B school to B school. There is no fixed month I can portray कि कब आपका CV freeze होगा. But if I have to be very honest, in most of the cases, August, September में CV freeze हो जाते हैं. Right. There could be certain exceptions. I am calling it out very honestly कि ऐसा नहीं है कि सबके अगस्त सितंबर में होंगे, but in most of the cases अगस्त सितंबर में freeze हो जाएंगे. Right. So this is how a one pager CV will look like, and this has taken into consideration all the things that we have discussed. So just one caveat over here, the internship that you will see in the topmost box, no, that is basically a summer internship, right? So uh, now
if someone would ask me very simply ना कि भाई ये जो इतना रंग बिरंगा रंगोली है, how do we have to use it? I would simply say wherever you find a green box made, focus on those areas. I will tell you kaise we have to read this particular chart, but for now, just understand wherever you see a green box, you have to focus on those areas. Now, what does a red box indicate? It indicates basically things that you can't change. Now, what does a red box and a yellow box indicate? Ki if you have done these things in your past, well and good, you can't change them. If you would want to change something in that particular area, if you would want to add something in your CV from that particular area, now please wait to join a B school. Don't hurry, right? एग्जाम्पल जैसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आपने ऑलरेडी ले ली है इन योर अंडर, इफ नॉट, वेट टू ज्वाइन अ बी स्कूल एंड देन टेक अप अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर, या तो आपने स्कूल अंडर वगैरह में यू हैव बीन पार्ट, यू हैव सॉरी यू हैव टेकन पार्ट इन सर्टेन एक्स्ट्रा करिकुलर्स. इफ नॉट, वेट, join a B school, then try to engage in some extracurricular activities. ठीक है. Now when I am talking about the first box, that is your summer internship. Why I have marked it in green, then a overlapping yellow box? Can anyone tell me? इतना लॉजिक तो सब लगा पाएंगे. Why I have marked it in a green box, but then there is a yellow box? Anyone would want to give it a try? No, no. It is completely for summers. नहीं नहीं नहीं, ये पूरा समर इंटर्नशिप के लिए ही है. दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज फॉर समर इंटर्नशिप ओनली. नो अंडर, नो फाइनल प्लेसमेंट, स्पेसिफिक टू समर इंटर्नशिप. ग्रीन इज सेक्शन, येलो इज एलिवेशन ऑन टॉप. अरे वो तो, ये तो आपने बता दिया हाउ आई मेड दिस स्लाइड. मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इट इज डिपिक्टिंग. ठीक है, लेट मी हेल्प यू आउट. एज आई ऑलरेडी मेंशन, द रूल्स रिमेन द सेम. ग्रीन मतलब अभी से काम करना शुरू करेंगे. कैन बी चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी इम्प्रूव्ड. अरे ऐसा तो नहीं है ना रूल्स. सी, रूल्स वर वेरी क्लियर. ये हमारे एक्शन आइटम्स बता रहे हैं हमको. इसमें इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, गुड, बैड ऐसा कुछ नहीं है. दीज कलर जस्ट टेल अस द एक्शन आइटम्स. रेड मतलब कांट डू एनीथिंग, जस्ट स्टॉप ओवर देयर. रेड फॉलोड बाय अ येलो मीन्स जितना अभी तक हो गया, लेट इट बी. Once we join B school, we will again start acting upon them. Green means we have time and it is something that needs to be worked upon. Let's start working on it from the next day itself. So why I have put that particular पहला वाला box into green and then the yellow part, कि उसमें दोनों elements involved है. Why would I say that? भाई इंटर्नशिप का प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होगा, द एसआईपी प्रोसेस, उसके लिए तो आप तभी बैठोगे जब प्लेसमेंट टीम वो प्रोसेस शुरू करेगी भी स्कूल में. बट प्रेपरेशन तो आज से ही शुरू हो सकती है ना. अ गुड कैंडिडेट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. व्हाई नॉट? बिकॉज नाउ इफ यू आर श्योर कि आपको एमबीए करना है, देन ऑब्वियसली आपको समर्स भी लेना ही है. अच्छा, यू वुड वांट टू गो इनटू अ गुड company in your summer internships, right? So preparation start from today itself, and the process of getting selected starts once you join your B school and once your placement team starts the placement week. Understood? Now is it clear? Just write yes or no very quickly. Perfect. ठीक है. Then what is the next green box we are having? That is basically key projects. अब key projects में you can mention your life projects as well and you can mention your internships as well. And again, let me be very honest, these nomenclature will vary college to college, but mota mati skeletal structure will remain the same for any CV you will create, right? So for life projects and internship, you can start working on them now. And let me be very honest, yesterday also I had a call from someone who was worried that if I start a life project now, will I be able to complete a life project before my CV gets freeze? If you start it now, yes, you will be able to complete it. But if you start it later, then there could
placement team to add CV point. Obviously, Vicky, in midway of your life project, you are able to arrange CV pointers from the company. That is also a third way out. Then what is the yes, then when we talk about achievements, here I'm specifically focused upon case competition achievements. And why it is again marked in green? Because you have to start participating. Is it? I Priyodit, is it any better now or is it still not that great? It's fine now. Okay, thank you, thank you. Yes, I also got a notification that there was some network issue, but okay. So do you want me to repeat? Do you want me to repeat any section or should I continue? Sure, sure, sure. I'll repeat, I'll repeat. So what I was saying is that in your key projects part, there could be. So I was coming back to the point from inception that I was talking that there was a guy who called me yesterday and he was like doing some query regarding YLP and everything. And in general, also he was asking that, see, if I get a live project today from any source, so will it be possible to complete that live project before my CV gets freeze? And will I be able to mention about my live project in my CV pointer? So I simply said, if you started today, it is very much possible that you complete it within 2.5 months, and then you have good CV pointers, and then you sort of mention it in your CV. This is one of the ways if you start your live project today. But again, yes, as you mentioned that in YLP it is very different, right? So uske liye bhi we have a way and we can discuss that uh, इन दिस सेशन या आफ्टर सेशन वट एवर इट मे बी बट मैं तीन तरीके बता सकता हूँ देखो या तो आप फर्जीवाड़े से ही लाइफ प्रोजेक्ट पॉइंटर्स कहीं से ले आओ यू आर नॉट वर्किंग ओनली यू आर जस्ट गेटिंग सीवी पॉइंटर्स टू पुट इन योर सीवी बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट द पैनलिस्ट विल कैच यू विद इन सेकेंड्स right within seconds of you discussing about your project they will catch that bhai this is a farziwada and you have not done anything around this project. Second thing would be you convince your placement team. That is also again a very tough task to do. That hey, I am working on a live project and it will be completed by this particular timeline. So either you may let me mention it in the CV or either you give me that opportunity. Once I complete my live project, then I will give you my CV pointers and then you update my CV. That is the second option. Third option is you while starting a live project, mention that it could be a possibility that I need the CV pointer while working upon the live project somewhere midway. So, तो उसमें क्या होगा? Whenever you get notification around your CV freezing thing, then you can mention to the company you are working with that, hey, as mentioned, can you provide me with the CV pointers? I need them. How to start it? Okay, Shrey, this is a very fair point, and let me tell you that how a life project is different from internship. I may be right, I may be wrong, but this is my personal understanding that I have built in 2 years of my MBA. That see, internship में क्या होता है, especially when we talk about internships specific to MBA, there is a specific program that every company runs. You are selected for that program, you are expected to join that program in a particular timeline. There are specific projects given to you. So those projects can be made up as in होगा वो live in the sense होगा वो practical project ही, but ऐसा नहीं होगा कि वो need of an hour होगा, right? हो सकता है कि देर इज अ प्रोजेक्ट दैट कंपनी वाज वर्किंग अपॉन इन पास्ट फ्यू मंथ्स बट अब वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे सो दैट प्रोजेक्ट इज गिवन टू यू दैट नाउ यू हैव दैट टाइम यू डू दिस प्रोजेक्ट शो अस द रिजल्ट्स यू कैन डू तो समझ रहे हो सो इंटर्नशिप इज अ वेरी candidate friendly thing and it is made for a candidate but on the contrary life project is something for example Prebbi is running a company they see that there is a problem that we as a team are not able to solve and we would need a extended support from someone we will float life projects so same problem that we are facing will be floated you are expected to work on that exact problem in internship you are given room to learn to grow to nurture your understanding then to build upon a project in life project it is similar to joining a company as a permanent employee working for that particular months and then going back
राइट। तो वो डिफरेंस, तो लाइव का मतलब ही वो होता है कि इट इज अ लाइव प्रॉब्लम अ कंपनी इज फेसिंग, दैट इज ट्रांसफर टू यू एंड नाउ यू हैव टू वर्क विद दैट एग्जैक्ट टीम टू वर्क अपॉन दैट प्रॉब्लम। इंटर्नशिप वाली फर्म में करूंगा अगर लाइफ प्रोजेक्ट, तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव हैड फ्रेंड्स जो 2 महीने के इंटर्नशिप करके आए थे, बट क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल था, उनका काम बहुत अच्छा था, द टाइम पीरियड फॉर देयर इंटर्नशिप was extended under the name of life project. They were paid for that life project, so technically 2 महीने इंटर्नशिप प्लस 4-5 महीने लाइफ प्रोजेक्ट till the time that project was complete and delivered, right? So this is a common thing, and इस ऐसा कुछ नहीं होता कि if you have done an internship with a company you can't do a live project with them. I'll take all the doubts towards the end. Let me proceed with whatever I want to tell to everyone. Sure. Cool. So these are the practical levers that one should focus upon while be school and before be school. So आई नो यू वुड से कि भाई बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, इट इज गेटिंग वेरी रिडंडेंट, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि दिस इज द रियलिटी। तो वी हैव टू डिस्कस इट एंड वी हैव टू गो अराउंड इट। सो जस्ट टू सम इट अप इन द लास्ट स्लाइड, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी केस कॉम्पिटिशंस एंड लाइफ प्रोजेक्ट, इसके बिना we can't go around. And now let me talk the real truth from the panelist perspective. भाई पैनलिस्ट को क्या देखना है? पैनलिस्ट को देखना है, डू यू हैव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is expected out of you if I am coming and interviewing you for a sales role? Do you have ability to solve a problem that will be given to you while your internship? If I am coming from a for a consulting role, do you have that ability to solve a consulting problem that the company will give you while your internship? How can I test it? How can I test it just by seeing the CV? Either you have worked on a live problem on in an application based sense under a live project or an internship. इससे एक तो application based understanding समझ आएगी. Second thing is if you have won a case competition under similar segment. Just imagine a company is providing you with a case problem without having any visibility in around what is going inside the company. You are able to give a solution that the company not just praises, but you also lands up a position that is in itself a depiction of that you have knack of solving the problem, you have that sort of application based competency that the company is looking for. Are we on the same page? Do you people agree कि हाँ भाई बात तो ठीक है, पैनलिस्ट को जो देखना है इन दो चीजों से, दे कैन गेज दीज टू थिंग्स? A yes or a no, or maybe whatever you feel like, but at least something. Yes, yes, ठीक है। Yes, ठीक है। प्लीज प्लीज ट्राई टू बी प्रोएक्टिव यार, मतलब दिस इज आई पर्सनली बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। आपका सीवी इस पे बहुत एंकर अराउंड कर जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज क्लब्स एंड कमिटीज। अब क्लब्स एंड कमिटीज क्या है? इट कैन गिव यू इनडायरेक्ट बेनिफिट्स if panelist asks you, or if a panelist wants someone who is a team player. A panelist wants someone who has proficiency in Excel and PowerPoint. A panelist wants someone, for example, sales role में हमको चाहिए होता है people who are good in negotiating, who are good in deal cracking and everything. So फिर आप अगर इस तरीके की कमिटी में हो, that involves these sort of works and it is visible in your CV pointers also. Then if not directly, you can indirectly mention, and obviously it will be there on your CV as well. But again, this is the second priority. We can't say that कि मेरे पास लाइफ प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट आई एम पार्ट ऑफ दिस XYZ कमिटी, सो यस। जो होता है, कई लोगों को लगता है कि अगर हमने एक दो क्लब्स एंड कमिटी ज्वाइन कर ले, सो दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्फ कि हमने क्या भाई, यू आर वर्किंग फॉर अ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, यू आर वर्किंग फॉर अ कॉलेज विदाउट इवन गेटिंग एनी पेमेंट, राइट? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट फॉर योर लर्निंग्स, बट इट इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट। And obviously you can talk about your learnings in an interview, that is obviously a given thing, right? अब हाँ, कुछ कमिटीज के अपने फायदे होते हैं, obviously if you
are around those फायदे, obviously then there are some contrary nuksan also to it. And that is something I guess we have kept a session around how to choose a club and committee. Usme this thing will be discussed in a greater depth. Then the next thing comes up is certifications. अब यार देखो, now I'll be very honest. I am now coming to that point. A lot of people were asking in last session also with आयुष कि भाई अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो इसका कितना बेनिफिट होगा, राइट? आंसर इज नो. Vinayaka, just understand. I'll give you, and this goes for everyone. It is a very simple understanding framework. If something is accessible to all, first thing, if something is free of cost, second thing, if something is provided to you without testing your ability around that theme, third thing, and what is the level of difficulty around that. If these four things are at the bottom of the level, then it has no value. बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है. अब आप इसमें चाहे कोर्सेरा कंपेयर कर लो, चाहे यूडेमी कंपेयर कर लो, अगर वो आपको फ्री में मिल रहा है या सस्ते में मिल रहा है, इट हैज नो वैल्यू. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. लर्निंग पर्सपेक्टिव से हाँ हो सकती है, बट जो क्या कहते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से, यस इट एवरीथिंग हैज वैल्यू. अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो इवन यूट्यूब वीडियोस आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट? एंड आप में से कई लोग लिटरली यूट्यूब से पढ़ेंगे बिफोर योर एग्जाम्स टू गेट दैट कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर हेड. बट अगेन सीवी के उसमें अगर आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, तो सबके पास होगा वो चीज. एंड इट इज द इजिएस्ट फिलर इन अ सीवी, राइट? Same goes for Udemy, same goes for other. I am not demeaning anyone, but I am talking specific to MBA. And सबसे important part, उसमें application based understanding या learning नहीं दिखता है, right? Now going to this part, कई लोग बोल भी रहे थे कि केस कंपटीशन कैसे सॉल्व करें, क्या करें. मतलब वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन इट. दैट विल बी अ वेरी डिटेल्ड आउट सेशन. बट फॉर नाउ, just to have a bare minimum understanding how to approach, see, start with participation. सबसे easy तो यही है, participate करना तो शुरू करो ना. मतलब without participating, when you don't even know कि how that ecosystem looks like, how will you crack a case form ना. आप पहले जाओ तो सही, फेल ही हो क्या हो, एक दो क्विज में रिजेक्ट तो हो कम से कम. देन वी विल डिस्कस दैट, ओके नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट? हो सकता है यूर प्लानिंग कि मैं कैसे केस कंपटीशन जीतूंगा, कैसे केसेस सॉल्व करूंगा, यू आर नॉट इवन एबल टू क्रैक अ क्विज राउंड, राइट? तो उसके लिए स्ट्रैटेजी फिर बहुत अलग हो जाती है कि नाउ व्हाट शुड आई डू टू फर्स्टली क्लियर दिस क्विज राउंड, उसके बाद आई विल थिंक अबाउट क्रैकिंग अ केस कंपटीशन, राइट? देन इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस, नो, आप केस प्रॉब्लम्स उठा लो और केस प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो. इफ नॉट सॉल्व, केसेस पढ़ना शुरू करो. दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन ऑल्सो. Start reading more and more business cases to understand how different businesses operate in different sectors and how different businesses have evolved over the years. Then third part is build familiarity with framework, storytelling, and slide building, right? So these things are very much important, and everyone would understand that why all of these things are important. Framework to क्यों important है, वो तो सबसे important है, and that you would understand till now. Now, where to start? See, hunt for student communities. Go on LinkedIn, go on WhatsApp, wherever you would find, hunt for student communities. We also have a case competition community where we float different updates around different case competition. We organize keep case breakdown sessions, that what exactly this case is talking about, organize case forums, everything. This is something what you can do from now also. Now, second part will be when you join a college, try to be part of a club or a committee that will give you entry to an alumni circle. And that alumni circle will help you out in a lot of ways. हो सकता है आपके डायरेक्ट सीनियर्स किसी केस फॉर्म में विनर्स ना हो, बट योर सुपर सीनियर्स या उससे सीनियर्स जो लोग हैं, they would have won or been at a podium finish and some particular case competition. So that opens up a networking opportunity for you to get insights around it. Then obviously campus seniors तो हैं ही, but again you will do all of these once you join a B school. Fourth and the most important thing is get familiar with platforms like Unstop. जैसे लोग बोल रहे हैं ना हमको नहीं पता, भाई you have to track that particular, उसमें जाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ,
every day check what are the live case competition, is there any new addition in live case competition. जब आप ज्वाइन कर लोगे बी स्कूल, आपकी प्लेसमेंट टीम्स भी आपको इन्फॉर्म करेंगी, अलग अलग कमिटीज होंगी जो इन्फॉर्म करेंगी, डेफिनेटली वो सब होगा, बट ऑन योर पार्ट प्लीज ट्राई हंटिंग फॉर देम, राइट. सो दिस शुड बी अ थिंग, अपनी तरफ से भी केस को हम हंट करना शुरू करो, एटलीस्ट बी स्कूल केस कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करो. देयर विल बी अ लॉट ऑफ केस कॉम्स जो हर बी स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा, एटलीस्ट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन देम. एंड ऑब्वियसली लास्ट पार्ट तो आई शुड नॉट कॉल आउट, बट ये तो बेस्ट वे आउट होगा ही होगा फॉर एनीवन हु इज सीरियस अराउंड केस कॉम्पिटिशंस. Now, a question from you all is that these four things are major aspects in terms of solving a case competition. सबसे पहला होता है प्रॉब्लम ब्रेकडाउन, सेकंड इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. बिजनेस में मैंने अभी बस दो चीज के ऊपर बात किया है. फर्स्ट इज मार्केट लेवल अंडरस्टैंडिंग, दैट हाउ इज द मार्केट ऑपरेटिंग, एंड सेकंड हाउ इज द सेक्टर ऑपरेटिंग. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, वेरी बेसिक. थर्ड इज use case of frameworks while solving a business problem using the understanding you have, and fourth is the ppt skill. Now I will give you 30 seconds. Please use this time and tell me आपके हिसाब से which is the most important out of these four and which is the least important. And I will request everyone, please give it a try and please write whatever you feel. अरे आंसर रुको रुको, लेट मी सी. ठीक है. Problem breakdown is first I am assuming most is problem breakdown, most is problem breakdown, most is problem solving, that is problem breakdown. PPT AI से बनवा लेंगे. Problem breakdown most, PPT is least, least is framework. ठीक है. Most is problem breakdown, least is framework. ठीक है. ठीक है. सो एटलीस्ट वी आर ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ कि भाई प्रॉब्लम ब्रेक डाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट केस सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. भाई व्हाट इज प्रॉब्लम डिमांडिंग फ्रॉम मी, पता चला प्रॉब्लम मेरे से कुछ पूछ रहा है, मैं सीधा केस सॉल्विंग पे निकल गया, एंड आई लिटरली am solving a problem that is not even expected out of me, right? And this is very common. You start participating in case competition and you will realize that how common this is. You will see this happening with your peers as well, कि आप उनसे जब डिस्कस करोगे after you have given your submission, you will realize कि आधा डेक ना उनका ऐसी चीज के ऊपर है जो केस में एक्सपेक्टेड ही नहीं था. It was their understanding, their assumptions, and then their solution, right? So why this is not, अरे हाँ, right. So again, I will give you 10 seconds. You see this heat map that is over there on your screen, and you can just write agree and disagree. Nothing else. If you agree with this particular heat map, good to go. If you don't agree, again, good to go. Agree, agree, agree. ठीक है. So I am glad that you all agree with this thing, but I just want to say that while starting, this is the right way to start. पीपीटी स्किल्स को भूल जाओ अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट. स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू वी सॉल्व डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम, हाउ डू वी navigate around different business problem. Yesterday also we discussed in one of the session की मीसी फ्रेमवर्क होता है, ये होता है, वो होता है. मीसी ही पकड़ लो. मीसी यूज करके ट्राई सॉल्विंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, सॉरी ट्राई सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट. ट्राई टू ब्रेक डाउन डिफरेंट प्रॉब्लम्स इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. सो इतना एग्जॉस्टिव ब्रेक डाउन कर दो ना कि आपको पता चल जाए कि भाई वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली लाइज, राइट. बट
इफ यू आर समवन जिसको केस कॉम्पिटिशंस जीतने हैं, तो रियलिटी यही है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप प्रॉब्लम ब्रेक डाउन कितना ही करते रहो, जाएगी तो पैनलिस्ट के पास पीपीटी ही ना। तो इवेंचुअली तो आपकी पीपीटी स्किल्स भी बहुत मैटर करती है। अगेन, आप कितना ही बिजनेस और मार्केट सेक्टर अंडरस्टैंडिंग ले लो, until and unless you are able to portray it through a framework, through a structured, अब फ्रेमवर्क मतलब सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में किसी चीज को दिखाना। ये नहीं बोल रहा कि फ्रेमवर्क मतलब है तो कोई फ्रेमवर्क ही उठा के लाना है आपको टेक्स्ट बुक से। बाय फ्रेमवर्क आई जस्ट मीन टू टेल योर सोल्यूशन बट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, राइट? तो नाउ, डू वी एग्री विद दिस स्लाइड और इस पे डिसएग्रीमेंट है? दिस दिस इज द फाइनल थिंग, अब कोई ट्विस्ट नहीं है पक्का, बट डू वी एग्री ऑन दिस और नॉट कि सही बात है, मतलब कि कुछ भी कर लो आप, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बिकॉज एवरीथिंग कंबाइंड विल क्रिएट अ गुड पिच डेक दैट कैन गेट मी अ गुड पोजीशन एंड मे बी अ पीपीआई पीपीओ। परफेक्ट, ठीक है, कूल। सो जो मैंने टाइमलाइन दिखाई थी ना, अभी के लिए वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर दैट वाज गिवन इन द लास्ट स्लाइड, बट बाय 2-3 months we will make sure that we are at this particular level where we are also proficient in making good PPTs along with good business understanding, along with the competency to break down any and every problem in a very structured manner. Perfect, okay, चलो, लेट्स मूव टू द, अटक जाता है भाई। हाँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू लाइफ प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर भी बहुत चीजें थी कि भाई लाइफ प्रोजेक्ट मतलब बहुत, मतलब हम, मतलब ऐसा लगता होगा आफ्टर अ पॉइंट कि भाई हमें भी पता है लाइफ प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गेट अ लाइफ प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो बता दो, वरना इंपॉर्टेंस तो हमें समझ आ गई है। ठीक है, डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट अगेन, बिफोर योर एमबीए स्टार्ट्स व्हाट कैन यू एक्चुअली डू? हंट फॉर लिंक्डइन पेजेस या लिंक्डइन चैनल्स जो स्टार्टअप बेस्ड पोस्टिंग डालते हैं, बिकॉज अ गुड एस्टैब्लिश्ड कंपनी विल नॉट गिव यू लाइव प्रोजेक्ट अनटिल एंड अनलेस आपका कोई रेफरल हो, आपकी कोई पहचान हो, या आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी हो उस पर्टिकुलर एरिया में। अ स्टार्टअप कैन गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर इवन विदाउट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल, आपको लाइव प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स वगैरह दे सकते हैं इफ यू कैन कन्विंस देम कि आप वो काम कर लोगे, राइट? तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो वेरी एग्रेसिव, टारगेटेड आउटरीच करो लिंक्डइन पे, एंड ट्राई टू गो फॉर सम गुड पेजेस जो स्टार्टअप रिलेटेड पोस्टिंग्स भी डालते हैं। यार घर के बिजनेस में चलो, वेरी गुड, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। सो वाइल वी वर इंटरव्यूइंग अ जूनियर फॉर आवर कमिटी नो, तो उसने भी अपने घर के स्टार्टअप में ही करा हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई बस कि द नेम ऑफ द कंपनी वाज अग्रवाल एंड सन्स एंटरप्राइजेस, एंड उसका नाम था XYZ अग्रवाल। तो मैंने बस पूछ लिया कि ये क्या आपके पापा की ही कंपनी है, एंड ही सेड कि यस, यस यू आर वेरी राइट इन दैट। तो मतलब ऐसा बहुत क्लियरली नहीं दिखना चाहिए कि अपने मतलब ऐसे घर की ही कंपनी में लाइफ प्रोजेक्ट करके आए हो, राइट? तो इफ यू आर डूइंग दैट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिल्ड अ गुड स्टोरी अराउंड दैट एंड बी माइंडफुल कि इतना इजीली कोई पकड़ना नहीं, नथिंग एल्स, राइट? देन ऑब्वियसली फिर से बेस्ट तो यही होगा कि आप YLP एक बार एक्सप्लोर करें एंड देखें व्हाट डू वी हैव टू ऑफर इन दैट, बट अगेन, तो आफ्टर ज्वाइनिंग MBA आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग टू, इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी है बट आई वुड से क्रिएट गुड रेपो विद योर प्रोफेसर्स, स्पेशली प्रोफेसर्स हु आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। दो तरीके के प्रोफेसर होंगे हर बी स्कूल में, वन जो परमानेंट फैकल्टीज होंगे, सेकंड जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे दैट विल कम एंड टेक गेस्ट लेक्चर्स। तो बिल्ड गुड रेपो फ्रॉम द प्रोफेसर्स हु आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, एंड इतना अच्छा रेपो बनाइए कि दे help you out in getting life projects, and I have seen this happening in a lot of colleges. Then opportunities floated through your placeforms and some other committees also. तो obviously अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट करोगे फिर तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ऐसा सर्व्ड इन योर प्लेट वाली अपॉर्चुनिटीज है। देन व्हाट कैन यू डू? आप एलुमनाई रेफरल पे डिपेंड कर सकते हो। इफ यू
फाइंड दैट देर इज अ कंपनी जहाँ पे कोई ओपनिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आफ्टर यू ज्वाइन अ बी स्कूल, यू कैन रीच आउट टू योर एलम्स इन दैट सेंस एंड यू कैन आस्क फॉर दैट हेल्प। अगर आप किसी क्लब एंड कमेटी का पार्ट बन जाते हो, उसके आलम नेटवर्क का एक्सेस तो आपको मिल ही जाता है। तो आई फील दिस इज द very big what should I say, very big advantage of being in a club or committee, कि आपको जो एक फैमिली लाइक आलम बेस मिलता है ना, वो एज अ नॉर्मल एमबीए नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप जिस क्लब एंड कमेटी का पार्ट होगे, उस क्लब एंड कमेटी का पिछले जितने भी साल तक से वो कमेटी है, उसका एलम एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। देन अगेन, कीपिंग जोक्स असाइड, अगर वाईएलपी नहीं हो तो इवन प्रेप भी ऑल्सो रिलीजेस a lot of role specific opportunities once and when we need someone to help us out in anything that comes up, right? And then this will be a exact life project that I talked about, कि जो हमको प्रॉब्लम लग रही होगी ना, उसके अराउंड ही वो होगी। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि क्या मेरे को ब्रांडिंग में कुछ मिल सकता है, क्या मेरे को नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, इफ यू फील यू आर अ गुड फिट फॉर इट, यू कैन सॉल्व दिस फॉर अस, कम, इफ नॉट, ओके, टाटा, गुड बाय। नाउ समवन वुड से हमें कैसे पता चलेगा? इफ यू आर पार्ट ऑफ प्रेप बी एलम्स ग्रुप, you will be the first one to be informed about anything that comes up. Yes. Now talking about certification. See, सर्टिफिकेशंस ना दो तरीके के होते हैं। एक तो यही जो आपके नॉर्मल जेनरिक सर्टिफिकेशंस होते हैं, देन देयर आर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आल्सो। सो प्लीज डोंट आस्क कि अगर मैं सीएफए कर लूंगा तो क्या उसकी वैल्यू होगी। हाँ भाई, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। एंड अगेन द फ्रेमवर्क दैट आई गेव यू अराउंड 4 पॉइंटर्स ना, आप उस पर कभी कंपेयर करके देख लेना, सीएफए कहाँ लाई करता है। क्या उसकी फीस बहुत ज्यादा है? यस। क्या उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है? यस। क्या उसकी टेस्टिंग बॉडी है जो बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट कंडक्ट करती है? यस। क्या वो हर किसी को सर्टिफिकेट देता है? नो। ऑब्वियसली इट क्रिएट्स, इट हैज वैल्यू। Same goes for Lean Six Sigma. If you are someone interested in supply chain, then Lean Six Sigma is also a professional certification that you can do. One problem that my CFA attempt is in November. हाँ तो भाई ये फिर आप नहीं डाल सकते सीएफए ना, तो एग्जैक्टली exactly, वो तो है ही है। इफ यू आर गिविंग सीएफए इन नवंबर, देन मतलब वही है कि अगेन इट इज हाउ गुड रेपो यू बिल्ड। एक तो मैं चाहूंगा कि आप नवंबर से पहले तो आप प्लेस ही हो जाओ। इफ समर से स्टार्टिंग इन सितंबर और लेट ऑफ सितंबर इन योर कॉलेज, आई वुड तो फर्स्टली वांट कि आप नवंबर तक प्लेस ही हो जाओ और आराम से रिलैक्स होगी सीएफए दो, सीवी पॉइंटर की तब तक जरूरत ही ना पड़े। राइट, हाँ तो वही है। सो दिव्यांश, वही चीज है कि कुछ फाइनेंस कंपनीज आती हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन करती है दैट वी नीड पीपल हु आर सीएफए एल वन क्लियर। आप उन कंपनीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे, बट कंपनीज अदर देन दैट जो आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएवे, यू आर गिविंग अटेम्प्ट, यू आर प्लानिंग टू गिव अटेम्प्ट इन नवंबर, एंड ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट योर लर्निंग्स, योर फेवरेट सब्जेक्ट, कहानीबाजी यू कैन डू। बट जहां पे वो मेक और ब्रेक हो जाएगा ना, वहां पे आप नहीं होगे। बट ऐसी बहुत कम कंपनीज है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो ऐसा सीएफए एल वन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लेके आएंगी। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके सीवी में सीएफए एल वन होगा, उनको बेनिफिट डेफिनेटली होगा उस चीज का, राइट। तो दिव्यांश, मतलब नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप, सर्टिफिकेट यार। आदिल, हाँ, सो आदिल, व्हाट आई सजेस्ट इज दैट ना, अगर आपको लीन सिक्स सिग्मा करना ही है, व्हाट आई सजेस्ट इज दैट आप थोड़ा वेट कर लो। क्योंकि मैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग से था, अभी फाइनेंस में कर रहा हूँ, तो वेरी डिफरेंट स्टोरी। बट लीन सिक्स सिग्मा मैंने भी कर लिया था, क्योंकि वो केपीएमजी कुछ ऐसा 24-25 कुछ हजार का करवाती थी, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट वाज कमिंग थ्रू माय कॉलेज, तो वो 3-4 हजार का हो गया था। तो मैं बोलूंगा इन इस कोर्स के लिए ना, आप अगर अभी तक नहीं करा है, जैसे दिव्यांश ने नवंबर वाला देना है, तो आई एम एज्यूमिंग वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होगा, है ना, क्योंकि अर्ली बर्ड तो निकल चुका है ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होगा। बट इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर इट, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीन सिक्स सिग्मा, जिसका ऐसे कोई विंडो स्पेसिफिक एग्जाम्स नहीं होते, प्लीज वेट बिफोर यू ज्वाइन अ बी स्कूल। वंस यू ज्वाइन बी स्कूल, गेट क्लैरिटी फ्रॉम योर बी स्कूल, फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, कि हमको क्या कुछ ऐसा सब्सिडाइज प्राइस बोल सकते हैं उस पे ये सब कोर्सेज करने को मिलते हैं कि नहीं मिलते।
CFI financial modeling is a good course, but it is not a comparable to CFA. If you are asking me, is it good or not? It is very good. If you are asking me, instead of CFA, if I do CFI financial modeling, will it suffice? The answer is no, because there is no comparison. और ठीक है, सो आई थिंक सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द। क्या लिखा है? बेस्ट यूज स्टे सर्टिफिकेशन दैट इम्प्रूव इंटरव्यू रेडीनेस और प्रोजेक्ट केपेबिलिटी। ठीक है, मतलब वेरी जेनरिक ज्ञान, वॉट एवर हैज टू बी डिस्कस दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस। नाउ कमिंग टू क्लब्स एंड कमिटीज। सो यूज क्लब एंड कमिटी फर्स्टली। तो अगर आपका सीवी खाली है तो यूज देम एज अ फिलर, ताकि आपका सीवी थोड़ा बढ़ जाए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सेकेंड, यूज देम एज अ प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज योर स्किल सेट। राइट, किसी ऐसे क्लब और कमिटी में जाना जो जेन्युइनली आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती हो। राइट, चूज अ क्लब एंड कमिटी इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। पहले से माइंड क्लियर रखना। डोंट गो इनटू हर्ड मेंटालिटी, डोंट अप्लाई फॉर ऑल द क्लब्स एंड कमिटीज। आपको लगता है कि दिस क्लब एंड कमिटी अलाइंस विद समथिंग दैट आई हैव इंटरेस्ट इन, तभी उसमें जाना। And when I talk about club and committee, I don't include placement committee in that, क्योंकि placement committee is obviously above all the clubs and committees. उसका डिस्कशन बहुत अलग है. So I am not talking about that particular club and committee, whatever it may be. But apart from that, if you are something समवन जिसको स्पॉन्सरशिप पिचिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि भाई मैं पूरी कोल्ड कॉलिंग कर सकता हूँ, तब आप किसी कल्चरल कमेटी में चले जाना जो साल भर वो स्पॉन्सरशिप पिचिंग करता है। इफ यू आर समवन हु वुड, जैसे आई टेक माई एग्जाम्पल इन प्रेप बी ऑल्सो, आई लाइक टू मेंटोर स्टूडेंट इन विच एवर वे पॉसिबल इन वट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव। सो आई ट्राई टू ज्वाइन एंड आई इवेंचुअली ज्वाइन दैट कमिटी जो कॉलेज में भी प्लेसमेंट, केस कंपटीशन, इन सब चीजों का प्रेप करवाती थी। राइट, एंड ऑब्वियसली जो कमिटी प्रेप करवा रही है वो अपने जूनियर को तो बहुत ही अच्छा प्रेप देगी एट द फर्स्ट प्लेस, बहुत अच्छा एक्सपोजर देगी एट द सेकंड प्लेस, एंड ऑब्वियसली जो बाकी कॉमन बेनिफिट्स है, गेटिंग एक्सपोजर टू योर एलम एंड एवरीथिंग, दैट ऑब्वियसली रिमेन्स। राइट, सो चूज अ क्लब एंड कमिटी वेरी वाइसली एंड प्लीज मेक श्योर दैट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है व्हेन यू ओवर कमिट टू अ क्लब एंड कमिटी, नो इट डायरेक्टली impacts योर academics. Please make sure you never take your academics for granted by being a part of club and committee. It is part of your MBA. It is not your only MBA. राइट, वहां पे जाके ऐसा बंधुआ मजदूरी नहीं करना है हमको कि सुबह दिन रात आधी रात को बस अपनी कमेटी का काम कर रहे हैं कि मतलब योर पेरेंट्स आर, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, दैट इज आई एम टेलिंग यू, एंड दिस वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। योर पेरेंट्स आर कॉलिंग, योर फैमिली आर कॉलिंग, योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग, नहीं नहीं भाई कमेटी का काम है, अरे यार भाई क्या 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 कर लोगे, व्हाट विल यू इवन डू? राइट, सो please understand, it should always be a part of your MBA journey. It should not be the only MBA journey you have lived. यार फाइनेंस और मार्केटिंग है ना, क्लब्स होंगे, कमिटीज क्या होती है जो कॉलेज रन करती है, एनीथिंग दैट, एनी बॉडी दैट हेल्प्स इन रनिंग ऑफ कॉलेज। राइट, की प्लेसमेंट टीम प्लेसमेंट करवा रही है, प्लेसमेंट प्रेप कमेटी जो है वो प्लेसमेंट की तैयारी करवा रही है, देन देयर इज अ एलम कमेटी जो पूरा एलम कनेक्ट बना के रख रही है अक्रॉस ईयर्स, देन देयर इज अ कल्चरल कमेटी जो हर साल कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो कॉलेज का कोई भी काम जो एक कमेटी, एक स्टूडेंट ड्रिवन बॉडी कर रही है, दैट इज अ कमेटी। क्लब्स होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड फोकस ग्रुप, कि हाँ भाई हम पांच लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, लेट अस मेक अ मार्केटिंग क्लब। ये एक डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना। What is the hierarchy? Obviously, committees are placed above clubs. Simple. If we do a foreign certificate of a famous person in a particular domain, ये इतना encrypted भाषा में क्यों बात, मतलब if we, कौन है वो फॉरेन पर्सन फेमस है जो बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर डोमेन में? एंड आई पर्सनली डोंट बिलीव कि पर्सन फेमस सर्टिफिकेशन इतने वैल्यू रखते हैं। इट इज ऑलवेज द बॉडी जो उन सर्टिफिकेट्स को एक्रीडेशन देती है, तब उनकी वैल्यू होती है। मतलब
कौन मतलब कौन ही फेमस पर्सन किसी सर्टिफिकेट को ऐसे वैल्यू क्रिएट कर सकता है? आई एम नॉट रियली श्योर। यूएस सर्टिफिकेशन इन कॉर्फिन, मतलब अगेन यू हैव टू टेल मी एग्जैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स, क्या है क्या नहीं है, बट एज आई ऑलरेडी मेंशन फ्रॉम वट एवर आई अंडरस्टूड कि सर्टिफिकेट की वैल्यू हमेशा उसकी एक्रेडिटिंग बॉडी से होती है। खाली सर्टिफिकेट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु इज इशूइंग यू अ सर्टिफिकेट, देन ऑब्वियसली वो पर्सन बहुत फेमस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अवस्थ दामोदरन, if I am not wrong, he is very much famous in valuation and all of these things, right? अब हाँ, अवस्थ दामोदरन ही, हाँ राइट। अरे तो सिंपल नाम ले देते ना भाई, ऐसा फॉरेन पर्सन वेरी फेमस इशूइंग अ सर्टिफिकेट, देन भाई अगेन मतलब आई वुड से कि आई वुड नॉट वांट टू कमेंट कि क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, बट अश्वत्थ, सॉरी सॉरी माय बैड, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। हाँ, क्योंकि क्योंकि फाइनेंस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ नेचर, मतलब फाइनेंस जॉब हैज दैट सॉर्ट ऑफ अ नेचर वेयर यू कैन प्रूव योर कॉम्पिटेंसी बाय अ सर्टिफिकेट, बट कॉन्ट्ररी सेल्स एंड मार्केटिंग में यू कांट डू दैट। मैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं जनरेट करके दे, मैं कोर्स सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसा कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करके दे सकता जो आपकी कॉम्पिटेंसी प्रूफ कर दे कि आप कितने अच्छे सेल्समैन। वो आपके नंबर्स और आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा। बट इफ यू हैव डन अ गुड कोर्स इन फाइनेंस, इट ऑब्वियसली टेल्स दैट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज बेस जो चाहिए। यार वो कोर्स तो बहुत अच्छा है, द वैल्यूएशन, द एवी एडवांस वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल, एवीएफएम कोर्स बाय वैल्यूएशन स्कूल, दैट कोर्स इज वेरी गुड। बट अगेन अगर आप बोलो कि भाई मेरे को शॉर्टलिस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं। बट यस, फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर पर्सनल बिल्डिंग, इट इज अ वेरी गुड कोर्स। स्किल बिल्डिंग के लिए इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। every money you will spend on that course is worth it. Apart from CFA and FRM, what are the best to add profile for finance domain? यार उसके अलावा देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वही है कि उससे फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मेरे को, मतलब ACCA भी है बट इट विल टेक टाइम, इट विल अगेन टेक योर मनी। देन मतलब वही है यार, फिर मैं आपको नाम 10 बता सकता हूँ बट वो वैल्यू नहीं है। मतलब आप CFA लेवल की वैल्यू एक्सपेक्ट मत करना उन कोर्सेज से। करने को आप NISM के बहुत सारे कोर्सेज हैं दैट आर गिवन बाय सेबी, मतलब सेबी NISM के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, तो देने को आप वो भी दे सकते हो NISM के एग्जाम। इक्विटी रिसर्च दे सकते हो, अल्टरनेट फंड्स दे सकते हो, दे हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। मेरे हिसाब से इफ यू वुड वांट टू डू समथिंग, इट स्टार्ट विद दैट एटलीस्ट, राइट? इफ यू आर कंफ्यूज्ड अराउंड की CFA दूं कि ना दूं, एटलीस्ट स्टार्ट विद NISM का जो NISM 15 वाला एग्जाम है, इक्विटी रिसर्च वाला। स्टार्ट विद दैट इफ यू थिंक कि हाँ दिस इज डूएबल, एवरीथिंग इज देयर, तब यू कैन गो टू NISM से स्टार्ट करो, दैट आई वुड सजेस्ट। ठीक है। रिस्पॉन्स टू माई क्वेरी एज वेल, राहुल शंकर is pursuing financial modeling from the Wall Street School worth it? See, Rahul, the answer remains same, चाहे आप वॉल स्ट्रीट से कर लो, चाहे आप प्रेम मोजो से कर लो, चाहे आप वैल्यूएशन स्कूल से कर लो, चाहे आप कहीं से कर लो, राइट? आप सीए वाला बहुत देखो, जितना मेरे को पता है ना, एक तो NISM का ही कोई है बट उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए स्पेसिफिक उस डोमेन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, उसके लिए पर आपको ACCA के कुछ लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। वो मतलब इफ यू गिव मी सम टाइम ना, मैंने क्योंकि एक बार देखा था इन सब चीजों के बारे में कि एक और होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो वैल्यू रखता है, बट उसके लिए आपको ACCA के कुछ मॉड्यूल्स खत्म पास करने पड़ेंगे बेसिकली, देन यू कैन गिव दैट फाइनेंशियल मॉडलिंग एग्जाम, राइट? तो आप ये सब कर सकते हो, इट विल ऑब्वियसली एड अ लॉट ऑफ
स्किल बिल्डिंग इन योर प्रोफाइल, बट हाँ ऐसा कि आप सोचो कि बहुत तगड़ा ब्रांड कोई ऐड हो गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, स्किल बिल्डिंग के लिए यू शुड डेफिनेटली डू, इफ यू आर someone who is new in financial modeling, if you are not that hands on in financial modeling, if you find it very hard to find linkages between the financial statements, ये सब चीजें अगर अभी आपको नहीं आती है ढंग से, तो अब तो फिर मत सोचो इन सब चीजों के बारे में। यू take up a course and start uh, going through the sessions and everything and start building your knowledge। यहाँ पे कितने लोग हैं मतलब पहले मेरे को ये बताओ, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए करना है या फिर अपनी प्रोफाइल में उसको चमकाने के लिए करना है? पहले आप मेरे को ये बताओ। नहीं, बोथ नहीं, सेलेक्ट वन, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? तो जितने लोगों के लिए भी लर्न फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, मैं आपको बहुत बेसिक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नथिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्टली, आपकी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कितने अच्छे से पढ़ पाते हो, कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, एंड हाउ इजिली यू कैन फाइंड लिंकेजेस बिटवीन देम, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, हाउ गुड यू आर विद एक्सेल। इन दोनों चीजों में आप अच्छे हो तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लोगे, ठीक है। एटलीस्ट बेस लेवल पे आप कर लोगे, उसके बाद अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल बनेगा, डीसीएफ बनेगा, जो भी बनेगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको लर्निंग के लिए करना है, बिफोर डायरेक्टली बाइंग अप अ कोर्स, वैल्यूएशन स्कूल के तो बहुत फ्री वीडियोस भी हैं जो बहुत अच्छे वीडियोस हैं। लाइक आई हैव सीन वन ऑफ हिज वीडियो, जो डू पॉइंट एनालिसिस पे, वो ही 1.5 घंटे का वीडियो है, बहुत इन डेप्थ वीडियो। तो एटलीस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्री कंटेंट दैट इज अवेलेबल, स्टार्ट गेटिंग हैबिचुअल ऑफ दैट कंटेंट, क्योंकि कोर्स लेके ना फिर ऐसा होता है आधी बार वो कोर्स ना आप बस बरी कर दोगे। जैसे ही आपके एमबीए का प्रेशर फटेगा, यू विल जस्ट बरी दैट कोर्स। सो स्टार्ट बिल्डिंग हैबिट अराउंड लर्निंग थ्रू वीडियोस, लर्निंग थ्रू डिजिटल कंटेंट, especially in finance. Start practicing it. Once you feel that yes, I have formed a habit, then jump to a course। सीवी में चिपकाना है, फिर आप कोई भी कर लो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड पकड़ेगा वो, उसके आगे वो कुछ नहीं पकड़ेगा, तो फिर आप कोई भी कर लो। वैल्यूएशन स्कूल करना है, यू कैन टेक दैट। आपको वॉल स्ट्रीट करना है, आप वो कर लो। सीएफआई वाला थोड़ा महंगा है, इफ आई एम नॉट श्योर। सीएफआई वाला इन सबसे बेटर सीएफआई होगा इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, बट प्योर लर्निंग पर्सपेक्टिव से, प्योर इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब इंडियन फाइनेंशियल मॉडल के पर्सपेक्टिव से अगर आपको करना है, तो आप वैल्यूएशन स्कूल फिर आई वुड पर्सनली सजेस्ट चूज करिएगा। बिकॉज वेस्टर्न फाइनेंशियल मॉडल्स और इंडियन फाइनेंशियल मॉडल्स में बहुत फर्क होता है। वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, अरे मेरे को नहीं आती भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैं कौन सा, तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, वेस्टर्न नेशंस आर डेवलप्ड नेशंस, उनका रिस्क रेट, उनका ग्रोथ रेट, हर चीज अलग होगी फ्रॉम अ नेशन लाइक इंडिया दैट इज अ डेवलपिंग नेशन। सो आई पर्सनली बिलीव, लर्न फ्रॉम अ मेंटर जो आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझा रहा है। इफ सीएफआई ऑफर्स दैट, प्लीज गो अहेड विद दैट। इफ नॉट, फ्रॉम नॉलेज बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, गो अहेड विद वैल्यूएशन स्कूल और एनी पर्सन जो आपको इंडिया के ऊपर बनाना सिखा रहा है, मतलब इंडिया के मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग करना सिखा रहा है। आई होप दिस क्लियर्स अ लॉट ऑफ डाउट, एंड प्लीज शेयर योर लिंक्डइन at end here, or maybe a WhatsApp, maybe on WhatsApp group, would love to connect, sure sure। एफआरएम भी नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप एनआईएसएम कर लो, पहले तो एनआईएसएम कर लो आप, एक चीज, क्योंकि वो एग्जाम है ना सर्ट। अब वही बात है, वैल्यूएशन स्कूल अगर मेरे पास 20,000 रुपए, मैं भी कर लूंगा, अभिजोत भी कर लेगा, सब कर लेंगे इस सेशन में जो बैठे, बस 20,000 रुपए चाहिए। एनआईएसएम के लिए फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड आवर्स लगाने पड़ेंगे, सेंटर पे जाना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, पास होगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। आप एक महीने भी इज्जत से पढ़ लोगे, एनआईएसएम निकल जाएगा, इफ यू आर सीरियस, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ चेजिंग
सीधा कोर्स बेस्ड सर्टिफिकेशन, ट्राई टू चेज एग्जाम बेस्ड सर्टिफिकेशंस, उससे वैल्यू डिफरेंशिएशन हो जाता है, राइट? सो आई थिंक सो दिस सेशन वुड हैव हेल्प्ड यू इन एनी सेंस। आप अगर 50% क्लैरिटी पे थे अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग, एटलीस्ट नाउ यू हैव 51% क्लैरिटी ऑन इट, 1% भी बड़ा है। सो आई वुड बिलीव कि थोड़ा हेल्पफुल था सेशन। एंड इफ यू फील कि हेल्पफुल था, तो जो भी हमने ग्रीन मार्कर्स देखे थे, इन वट एवर वे पॉसिबल, इन वट एवर कैपेसिटी पॉसिबल, प्लीज स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम। Once you join B School, you'll realize that you have had a very good head start with comparison to your peers, right? So all the best again for your B School journey, and I would wish every one of you join a very good company, and finals पे तो हम कभी बात ही ना करें, you get PPOs. चलो, bye, good night.